Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So, thank you so much for coming here today for the Srila Prabhupada Memorial Festival. श्रील प्रभुपाद स्मरणोत्सव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Haribo. हरिबो. And my great gratitude to the organizers of this wonderful festival. तो इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. And I am very grateful for this opportunity, to speak. और मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ. And the opportunity to hear. और श्रवण करने के लिए भी बड़ा कृतज्ञ हूँ. As I'm hearing so many stories from wonderful devotees like His Grace Ujjain Prabhu that I'm hearing for the first time. जैसे कि श्रीपाद उदयानंद प्रभु मैं पहली बार आपको सुन रहा हूँ. This is the great wealth of that Srila Prabhupada's legacy that we're receiving. ये श्रील प्रभुपाद की विरासत की महान संपदा है जो हमें प्राप्त हो रही है. Like to hear about the humility of Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की विनम्रता के बारे में श्रवण करना. He's about to preach to 30,000 people in Mathura. श्रील प्रभुपाद मथुरा में 30,000 लोगों को प्रचार करेंगे. He turns to his Western disciples. वे अपने पाश्चात्य शिष्यों की ओर मुड़ते हैं. He says, "Please forgive me. I'm going to speak in Hindi." कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए मैं हिंदी में बोलूँगा. This is the humility of Srila Prabhupada. ये वास्तव में श्रील प्रभुपाद की विनम्रता है. Srila Prabhupada ki jai. So Srila Prabhupada, one of his great qualities, unlimited qualities, is that of a preacher. श्रील प्रभुपाद के महान गुणों में से एक गुण है जो कि है वे एक बड़े प्रचारक हैं. The preaching from Mangal Aarti to midnight. मंगल आरती से आधी रात तक प्रचार कर रहे थे. And then translating Srimad Bhagavatam. उसके बाद रात को बैठ के भागवतम का अनुवाद कर रहे थे. So when Srila Prabhupada is meeting the VIPs, जब श्रील प्रभुपाद महान गणमान्य व्यक्तियों से मिल रहे थे, when he's preaching to the masses, जब ये साधारण जन साधारण को प्रचार कर रहे थे, when he's channeling Krishna through his transcendental Bhaktivedanta purports, जब ये श्री कृष्ण को भक्तिवेदांत तात्पर्य के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे थे, he's utilizing different stories in preaching Krishna consciousness. ये अलग-अलग कथाओं को कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उपयोग कर रहे थे. Sometimes some shloks, कभी-कभी कोई श्लोक, different shloks for different folks. अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग श्लोक. Yeah, and sometimes he's quoting some previous acharyas like Vishwanath Chakravarti Thakur. और कभी-कभी ये पूर्ववर्ती आचार्य जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से उद्धृति दिया करते थे. And sometimes he's telling some contemporary stories from today to get the point of Krishna consciousness across. और कभी-कभी ये अपनी कथा को प्रासंगिक बनाने के लिए वर्तमान युग से उदाहरण देके कृष्ण भावनामृत के संदेश को पहुंचा रहे थे. So this morning I'd like to try to share just a few of those stories that Srila Prabhupada would like to tell to preach Krishna consciousness. तो आज सुबह के सत्र में मैं उन कथाओं को बताना चाहूँगा जिनका उपयोग श्रील प्रभुपाद प्रचार के कार्य में किया करते थे. And give us lessons in Krishna consciousness. और हमें कृष्ण भक्ति में अलग-अलग सबक सिखा रहे हैं. Sometimes he tell these stories in Bhagavatam class. कभी-कभी ये भागवतम कक्षा में कहानियां सुनाया करते थे. Sometimes in the Pandal programs. कभी पांडाल के कार्यक्रमों में. And sometimes in his purports. और कभी-कभी अपने तात्पर्यों में. So the first story teaches us not to be lazy. पहली कथा हमें शिक्षा देती है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए. We used to say no crazies, no lazies. जैसे कि कहा जाता है कोई सन की नहीं और कोई Prabhupada would say that. प्रभुपाद ऐसा कहा करते थे. No crazies, कोई सन की नहीं, no lazies. और कोई आलसी नहीं. All right. So how not to be lazy? तो कैसे आलसी नहीं हो? So one time there was an employer, he had a company. तो एक बार एक व्यक्ति की एक बड़ी प्रतिष्ठान थी. And he wanted to hire someone to work for him. और वो कुछ लोगों को अपने लिए कार्य करने के लिए रखना चाहता था. He had a list of people.
उसके पास एक लोगों की सूची He थी, narrowed it down to 2 persons. उसने उसमें से 2 लोगों को चुना, He had his secretary call the 2 persons. अपने सचिव के माध्यम से दोनों को बुलवाया। First person comes, पहला व्यक्ति आता है, knocks on the door. दरवाजा खटखटाता है, Better mic. Okay, come inside. ठीक है अंदर आओ। He interviews this person for वे- for 15 minutes. 15 मिनट तक इनका साक्षात्कार चलता है, All qualifications are there. सभी योग्यताएं हैं, He's a college graduate. ये कॉलेज के पढ़े हुए He has शिक्षित, previous work experience. इन्होंने पहले भी कहीं कार्य कर रखा है, Looks like good man for the job. ऐसा लगता है कार्य के लिए समुचित व्यक्ति है। Okay, thank you. You can go. Next person. ठीक है आप जाइए। अगले व्यक्ति, First person leaves. पहला व्यक्ति बाहर जाता He है, opens the door. दरवाजा खोलता है And then he leaves the door open. और वो दरवाजे को खुला ही छोड़ देता है। Next person comes. अगला व्यक्ति अंदर आता है, He comes inside, वो closes अंदर the आता door. है, दरवाजा बंद करता है, Yeah. And then he interviews him for 15 minutes. और उसके बाद अगले 15 मिनटों तक इनका साक्षात्कार चलता है। No college degree. इनकी कोई कॉलेज की योग्यता नहीं है, Barely finished high school. केवल स्कूल की पढ़ाई पूरी की है, No work experience. काम का अनुभव भी नहीं है। Okay, you can go. ठीक है आप जा सकते He हैं। opens the door. दरवाजा खोलते हैं, Then he closes the door. फिर वो दरवाजे को बंद करते हैं। Then the man met his secretary. उसके बाद ये व्यक्ति अपने सचिव को बुलाता Do है। you know which of these 2 men I'm going to hire? क्या तुम्हें पता है इन दोनों में से मैं किसको चुनने वाला हूँ? The secretary well said, of course, the first one. सचिव ने कहा हाँ वो पहला वाला, He has the college degree. उसके पास कॉलेज की डिग्री है, He has the work उसने experience. काम किया है। The boss said, no, बॉस ने कहा नहीं, I'm going to hire the second one. मैं दूसरे वाले व्यक्ति को चुनूंगा। The first one is lazy. पहला वाला आलसी है, He did not shut the door. उसने दरवाजा बंद नहीं किया। The second one, he's not lazy, दूसरा व्यक्ति आलसी नहीं है, so he can learn quickly. तो वो जल्दी सीख सकता है। So from this story, we learn we should not be lazy. तो इस कथा से हम सीखते हैं हमें आलसी नहीं होना चाहिए, Always be alert हमें हमेशा सावधान होना and चाहिए take care of every detail of devotional service. और भक्ति की सभी बारीकियों को ध्यान से देखना चाहिए। Attention to detail is a sign of love. बारीकियों पे ध्यान देना प्रेम का लक्षण है। So we want to cultivate this mood of loving Krishna. तो हमें कृष्ण से प्रेम करने के मनोभाव का विकास करना होगा। Nitya Siddha Krishna Prema Sadhikabu no Ananda. We want to wake up with Ananda, with bliss, the Krishna Prema in our hearts. हम कृष्ण प्रेम के साथ उदित होना चाहते हैं, उदयानंद। Udoy. Udoy. Yes, yes. So we must pay careful attention to every detail. तो हमें हर बारीकी पे बड़ी सावधानी से ध्यान देना चाहिए। No crazies, कोई सनकी नहीं, no lazies. कोई आलसी नहीं। Don't be lazy. आलसी मत बनिए। Okay, next story. अगली कथा सुनाता हूँ। Haribo. हरि बोल। Prabhupada tells this story प्रभुपाद ने कथा in order to instruct us how to be expert preachers. हमें ये सिखाने के लिए बताई थी कि कैसे दक्ष प्रचारक होना चाहिए। So the preacher must learn to preach according to Kala Desha Patra, time, place and circumstance. प्रचारक को देश काल पात्र के अनुसार प्रचार करना आना चाहिए। And most importantly, audience. और सबसे महत्वपूर्ण है जिनको प्रचार कर रहा है। Pick some topic your audience is interested in ऐसे विषय को चुनिए जिसमें आपके श्रोताओं को रुचि हो and find some way to touch their hearts. और किसी प्रकार से उनके हृदय को स्पर्श करने का माध्यम खोजें। For example, we are all interested in Srila Prabhupada. उदाहरण के लिए हम सभी श्रील प्रभुपाद में रुचि रखते हैं, That is why we're all here. इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। So because the topic is Srila Prabhupada, चूंकि विषय है श्रील प्रभुपाद, we're all interested. हम सभी को रुचि है। So this story, Prabhupada teaches this principle. तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे सिद्धांत सिखाया है। So Prabhupada gives the example of a Christian preacher. श्रील प्रभुपाद एक ईसाई प्रचारक का उदाहरण देते हैं। So the Christian preacher, he went preached to the miners. Miner means someone who gets the iron and the gold and the metal from inside deep in the tunnels of the mountains. ईसाई प्रचारक खनिकों को प्रचार करने के लिए वहां पे गए जहां पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं।
So it was in the United States, तो ये उत्तरी अमेरिका की घटना है and the preacher went to the miners. और प्रचारक उन खनिकों के पास जाते हैं. All day long, the miners would go deep inside the ground. सारा दिन ये खनिक जमीन के अंदर जाते हैं और खनन करते It हैं. was very dark. वहाँ पे बहुत अंधकार होता It है, was dirty. बहुत गंदगी होती And they है would be digging to try to find some iron or steel from और ये the earth. खनन करते हैं ताकि उन्हें कुछ खनिज प्राप्त हो सके. The preacher went to meet them. प्रचारक उनसे मिलने जाते हैं. They were all having coffee break. सब लोग बैठ के कॉफी पी रहे हैं, And they were reading their newspapers. अखबार पढ़ रहे हैं. The preacher said, "Surrender to Jesus. Surrender to Jesus." प्रचारक ने कहा जीसस की शरण ले लो. They said, "Why?" उन्होंने कहा क्यों लें? They said, "If you do not surrender to Jesus, you will go to hell. यदि तुम जीसस की शरण नहीं लोगे तो तुम नरक जाओगे, You will burn तुम्हें जला दिया in जाएगा hell." नरक में. They said, "What's hell?" तो उन्होंने कहा नरक क्या होता है? They said, "Hell." The preacher said, "Hell is a terrible place. प्रचारक ने कहा नरक बहुत ही भयावह स्थान है, It's very dark. बहुत ही अंधकार है, You cannot breathe. सांस नहीं ले सकते, It's very dirty." बहुत गंदा है. They said, "No problem. उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं, We work there every day." हम रोज काम करते हैं. The preacher had to think. प्रचारक सिर खुजलाने लगा. Preacher had an idea. प्रचारक को एक विचार आया. The preacher said, "Do you know प्रचारक ने कहा क्या आप जानते हैं that in hell, नरक में- hell. नरक में there's no newspapers?" कोई अखबार नहीं आता. They said, "Oh no! उन्होंने कहा नहीं, How do we surrender to Jesus? हम लोग जीसस की शरण लेंगे, We're ready. हम तैयार हैं, We surrender." हम शरण लेंगे. So Prabhupada told this तो story प्रभुपाद ने कथा सुनाई because the newspapers was important to the coal miners. क्योंकि उन खनिकों के लिए समाचार पत्र बहुत महत्व रखते थे. So we have to find out what is important to those conditioned souls that we're trying to encourage in Krishna तो हमें ये consciousness. देखना होगा जिन बद्ध जीवों को कृष्ण भक्ति में हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं उनके लिए क्या चीजें महत्वपूर्ण है. Whether it's students, ये शिष्य छात्र हो सकते they हैं, can improve their grades, their concentration. ये अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं ऐसा हो सकता है. Whether it's ये families, परिवार हो सकते they हैं can improve their family life. जो अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बना सकें. Businessmen, व्यवसायी, more money. ज्यादा पैसा. Whether it's yogis, योगी हो सकते हैं, yoga connection. योग शक्तियां. Just like yena kena prakarane, whatever it takes, we have to give them Krishna consciousness. ये न के न प्रकारेण जो कुछ भी हो हमें कृष्ण भावनामृत प्रदान करना है. Or as the Radha Damodar bus party devotees used to say, by hook or by crook, give them the book. जैसा कि राधा दामोदर बस पार्टी के भक्त कहा करते थे, कुछ भी हो उन्हें पुस्तक दे दो. So Prabhupada used the story of the coal miners and the Christian preacher to teach us to preach expertly. तो श्रील प्रभुपाद हमें खनिकों की कथा सुनाते हैं ताकि ये सिखा सकें कि कैसे देश काल पात्र के अनुसार प्रचार किया जाना चाहिए. Okay, I'm going to tell another story. ठीक है, मैं एक और कथा सुनाने वाला हूँ. हरि बोल. This story illustrates the fact that we should be enthusiastic. तो ये कथा हमें शिक्षा देती है कि हमें उत्साही होना चाहिए. So one time, Srila Prabhupada was on an airplane. एक बार श्रील प्रभुपाद हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे. He was with His Holiness Indradumna Swami वे अपने शिष्य इंद्रदुम्न महाराज के साथ थे and maybe Parivrajakaacharya was a secretary at that time. और शायद परिव्राजकाचार्य स्वामी उनके सचिव हुआ करते थे. So who here has flown on an airplane? Have you flown on an airplane? यहाँ पे Yes. कौन कौन हवाई यात्रा कर चुके हैं? हाथ उठाइए. Hawaii Jahaz chalenge, you saw? Yeah. When you're on the Hawaii Jahaz, do sometimes they show movies? जब आप हवाई जहाज में होते हैं कभी कभी वो सिनेमा दिखाते हैं, चलचित्र दिखाते हैं. Now we know as Hare Krishna devotees we're not supposed to watch the movies. तो हरे कृष्ण भक्ति के रूप में हम जानते हैं हम लोग चलचित्र नहीं देखते. But sometimes it's hard. तो कभी कभी मुश्किल होती है, You get attracted. हम लोग आकर्षित हो जाते हैं. Sometimes I get attracted also. कभी कभी मैं भी आकर्षित हो जाता Who हूँ. here sometimes gets attracted to the movies? Okay, कौन this, कौन कभी कभी this चलचित्रों is, के प्रति आकर्षित होता है? this हाथ is उठाइए. disclosure. Okay, yeah. ये एक रहस्योद्घाटन है. This is
Pretty poor. This is Pretty Lakshanam. We're revealing the mind and confidence. ये प्रीति लक्षण है, हम लोग गोपनीयता से मन की बात कह रहे हैं. So on this particular flight, they were showing a movie. तो इस विशिष्ट यात्रा में वे एक चलचित्र को दिखा रहे थे. So Indradumna Swami was thinking, no, I don't want to watch the movie because then Prabhupada may see me. तो इंद्रदुम्न महाराज सोच रहे थे, ओ मैं चलचित्र नहीं देखूंगा क्योंकि हो सकता है श्रील प्रभुपाद मुझे देख लें. So he has his chatter, he's trying not to watch. तो उन्होंने अपनी चादर इस प्रकार से उठाई और मुंह को ढाक लिया. He's looking. देख रहे हैं और मुंह ढाक रहे हैं. And then he looks over at Srila Prabhupada. और तब उन्होंने श्रील प्रभुपाद की ओर देखा. You see, Srila Prabhupada is watching the movie. और उन्होंने देखा प्रभुपाद मूवी देख रहे हैं. Prabhupada is laughing. और प्रभुपाद जोर जोर से हंस रहे हैं. Slapping his leg. अपनी जांघ पीट रहे हैं. He's in ecstasy. ताल ठोक रहे हैं. And he says, Prabhupada is watching the movie. I'm also going to watch the movie. मैंने कहा प्रभुपाद मूवी देख रहे हैं, चलचित्र देख रहे हैं, मैं भी देखूंगा. The movie is of a famous comedian named Charlie Chaplin. तो ये चार्ली चैपलिन का चलचित्र था. So in this scene, Charlie Chaplin is in a dance contest. तो चार्ली चैपलिन यहाँ पे नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. And he and his partner, they go outside to get a drink of water and they sit on a bench. तो ये और इनके साथी बाहर जाते हैं और बेंच पे बैठ के पानी पीते हैं. So he and this lady, they're sitting, this Mataji, they're sitting together on the bench, but behind them, some small children, nut-cut children, very mischievous children. They take a hammer nail or some glue, and they glue his jacket to the seat. He can't get up. तो ये माता जी और चार्ली चैपलिन दोनों बाहर बेंच पे बैठे हुए थे, किंतु कुछ नटखट शरारती बालकों ने उस पे गोंद चिपका रखी थी, तो इनके कपड़े वहां चिपक गए. Prabhupada is watching. प्रभुपाद देख रहे थे और हंस रहे थे. Then Charlie Chaplin, he gets up. चार्ली चैपलिन उठ के खड़े होते हैं. And then his tails tear. और पीछे से कपड़ा फट जाता है. And Charlie Chaplin goes, "Kya hua? What happened?" And he sees his coattails of torn in pieces. और देखते हैं पीछे से कोट के 2 टुकड़े हो गए. He said, "What can I do?" मैंने कहा अरे ये क्या कर दिया. I said, "Okay." He tears him more. तो ठीक है, उसको लेके और फाड़ देते हैं. Halfway gone. आधा फट गया है. Yeah. He gets up, grabs his partner. उठाते हैं, अपने साथी को पकड़ते हैं. They start dancing wildly. और पागलों की तरह नाचने लगते हैं. And he's dancing and dancing, and people say, "Oh, he's such a wild man." और ये नाच रहे हैं, लोग सोच रहे पागल हो गए. And he's so enthusiastic. इतने उत्साही हैं. The other couples that are dancing, और बाकी जो लोग नृत्य कर रहे थे, they start doing the same thing. वे भी वही करने लगे. And they're dancing, and Prabhupada is like, Prabhupada is in ecstasy. प्रभुपाद जोर जोर से हंस रहे थे. So then Prabhupada later, he explained this in a class. और बाद में प्रभुपाद क्लास में इसका वर्णन करते He हैं. said, we should just continue our Krishna consciousness. हमें अपने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते रहना चाहिए. Preach very enthusiastically. बड़े जोर से उत्साह करना चाहिए. And if we are enthusiastic, यदि हम उत्साही हों, then others will also take up this chanting तो दूसरे लोग भी इस कीर्तन को स्वीकार करेंगे. of the Hare Krishna Maha Mantra. हमारा हरे कृष्ण महामंत्र. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Srila Prabhupada has given us this great gift of enthusiasm and this great gift of the holy names. तो श्रील प्रभुपाद ने हमें उत्साह और हरिनाम का अनूठा उपहार दिया है. On September 17th, in just a couple of days,
begins Vishva Harinam Saptaha, World Holy Name Week. 17 सितंबर जो कि कुछ दिनों में आने वाला है, उस दिन से वर्ल्ड होली नेम वीक यानी कि विश्व हरिनाम सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। September 17th is the day that Srila Prabhupada arrived in America. 17 सितंबर को श्रील प्रभुपाद अमेरिका पर प्रविष्ट हुए थे। Srila Prabhupada is the global ambassador of the holy names. श्रील प्रभुपाद हरिनाम प्रचार के विश्व के सबसे बड़े प्रचारक हैं। Rajdut? राजदूत हैं। Ah. Srila Prabhupada ki जय। So the history of World Holy Name Festival, it started 1996 during Srila Prabhupada's centennial. तो श्रील प्रभुपाद की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पे विश्व हरिनाम सप्ताह की शुरुआत हुई थी। This year we're celebrating our 26th anniversary. तो इस वर्ष हम अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। So we want to encourage devotees and everyone to preach and chant the glories of the holy name. तो हम especially. चाहते हैं कि विशेष रूप से सभी लोग भगवान के नामों के कीर्तन करें और उसकी महिमा का प्रचार करें। We're having our program this year called Fresh Air Kirtans. इस साल हमारे एक विशिष्ट कार्यक्रम है खुली हवा का कीर्तन। Because before last year everyone was inside because of COVID. क्योंकि 2 साल से सब लोग महामारी के चलते घरों में कैद थे। So chalo harinam karo. चलो हरि नाम करो, Bahar jenge. बाहर जाएंगे, Go outside. बाहर जाओ, Ha, taza hawa, fresh air. ताज़ी हवा। Tazi hawa. Yes, go out for fresh air kirtans. And also another program we're doing is called Fortunate People. और हम एक और कार्यक्रम चला रहे हैं, उसे कहते हैं भाग्यशाली लोग। We have our Fortunate People website. एक भाग्यशाली लोगों की वेबसाइट भी है। On this website, इस वेबसाइट में globally, पूरी दुनिया भर के there are more than 200,000 videos of people chanting Hare Krishna. 2 लाख से अधिक लोगों की वीडियो हैं जो लोग हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। So we encourage you to go to this Fortunate People website, तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं इस वेबसाइट पे जाएं, register as an ambassador. वहाँ पे हरि नाम के राजदूत के रूप में नाम लिखाएं। This is Parampara, Rajdut Parampara. तो ये राजदूत परंपरा है। Yes, ambassador. And then take photos, not photos, make videos with your phone of people chanting Hare Krishna. और वहाँ पे लोगों के हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए वीडियो बनाइए। You can make videos of your friends, आप अपने मित्रों के वीडियो बना सकते हैं, your family, परिवार के, your co-workers, अपने साथियों के, or just go to anyone on the street या जाओ जाके सड़क पे बताओ और वीडियो बनाओ। and say, we're chanting this mantra for love and peace. ये कहिए कि हम इस मंत्र का जाप प्रेम और शांति के लिए कर रहे हैं। Please chant. कृपा करके कीर्तन कीजिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then we have an app, the Fortunate People app. इसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप है फॉर्चुनेट पीपल। And then hit send, upload. जाइए अपलोड कीजिए। Boop. He's very good, huh? Ekdam bahut badhiya. And it goes right to our website. और ये सीधे हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएगा। So please join us in this Fortunate People तो campaign. इस फॉर्चुनेट पीपल कैंपेन में भाग लीजिए। We're also having an online festival हमारा एक ऑनलाइन फेस्टिवल भी चल रहा है from 17th to 23rd, 17 सितंबर से 23 सितंबर तक 6 p.m. to 9:30 p.m. शाम को 6 IST. से रात 9:30 बजे तक। We're going to have Kirtan standard seminars. हमारे कीर्तन स्टैंडर्ड का सेमिनार होगा। कीर्तन के मापदंड क्या होंगे? Kirtan standards Hindi mein? कीर्तन के मापदंड। Okay. And we're going to have Sanskrit pronunciation और seminars. संस्कृत उच्चारण का भी सेमिनार होगा। Online kirtans ऑनलाइन कीर्तन and also japa reform, japa retreats. और जप को बेहतर बनाने की पद्धतियाँ। With great souls like Jayadvaita Maharaj, जय अद्वैत महाराज वहाँ पे रहेंगे, Mahatma Prabhu, महात्मा प्रभु रहेंगे, and Giriraj Swami, गिरिराज and स्वामी so many wonderful और personalities. इतने अधिक महात्मा। So please, this will be on Mayapur TV तो ये मायापुर टीवी पे लाइव दिखाया जाएगा and also World Holy Name, Iskcon Kirtan Ministry.com.
और ये ISKCON kirtanministry.com पे भी दिखाया So जाएगा। our wonderful dear Shrutakirti Prabhu has come. तो हमारे प्रिय श्रुतकीर्ति प्रभु आ चुके हैं, So I'm going to stop here. तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, And so we can hear the nectar from His grace Shrutakirti Prabhu. हरि बोल। Thank you very much. We बहुत had धन्यवाद। 3 stories that Prabhupada would preach with today. तो हमने 3 कथाएं सुनी किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद प्रचार करते थे। First one, don't be lazy. पहली कथा है सन की मत बनो, Close the door. दरवाजा बंद करो। Yeah. Second one, preach expertly. दूसरी कथा जोर शोर से प्रचार करो। In hell, नरक में there's no newspapers. कोई अखबार नहीं मिलता। And the third, be enthusiastic. और तीसरी कथा हमेशा उत्साही बने रहो, Like Charlie Chaplin. चार्ली चैपलिन की तरह। Don't be afraid what people think. ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे। And lastly, और अंत में please कृपा करके join us हमारे साथ आए for World Holy Name Festival. विश्व हरिनाम महोत्सव के लिए। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Srila Prabhupada ki Jai. jai. Vishwa Harinam Saptaha ki jai. Jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. His Holiness श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका। हरे कृष्णा. आपकी कथाओं में है ऐसा असर, घड़ी पर नहीं जाती है नज़र। कीर्तन का ऐसा उन्माद, पैर नहीं सकते ठहर। उदय हुआ आनंद और कई शिक्षाओं की आप लाए लहर। हरि नाम और शील प्रभुपाद कथा का ये अद्भुत सफर, आप वैष्णवों के संग में चलता रहे अष्टप्रहर। So we are very grateful to Maharaj. You can see Maharaj's presentation. It is just like I was feeling like a rock star. So Maharaj can attract us to Srila Prabhupada through his wonderful presentation and deep teachings. श्रील प्रभुपाद के महत्वपूर्ण शिक्षाओं को महाराज अपने अद्भुत प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के प्रति हमें आकर्षित कर रहे हैं। Maharaj mentioned that with his 3 incidents, 3 stories, attention to the details is the sign of love. महाराज ने अपनी 3 कथाओं में बताया कैसे बारीकियों पे ध्यान देना प्रेम का लक्षण होता है। And what is the techniques of preaching? और किस प्रकार से प्रचार किया जाए। Please be enthusiastic. कृपा करके उत्साही बने रहें। And there is one event is coming, World Holy Name Week. और विश्व हरिनाम सप्ताह आने वाला है। So are we ready to celebrate this festival? क्या आप इस महोत्सव को मनाने को तैयार हैं? हरि बोल। So Iskcon Ujjain is celebrating this festival since तो last ISKCON many years. इस्कॉन उज्जैन में ये महोत्सव पिछले 10 वर्षों से मनाया जा रहा है। And this time we are very fortunate इस बार हम that बहुत भाग्यशाली हैं। Iskcon Kirtan Ministry leader Maharaj is with us. इस्कॉन कीर्तन मिनिस्ट्री से महाराज स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। हरि So, बोल। on 17th morning we will have at 6 a.m. we will have Nagar Sankirtan. 17 तारीख सवेरे को हम लोग नगर संकीर्तन निकालेंगे। And 18th morning also. 17th Holy Name Week is beginning, and there are many other events like Maharaj mentioned. Fortunate people, so you can all have selfie and share it with others for their self-realization. So with this, we will thank Maharaj by one time chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj ki. जय। So now we have another treat. माला। We are going to hear from His Grace Shrutakirti Prabhu. As we all know, His Grace Shrutakirti Prabhu, at the age of 20 years, he surrendered himself to Srila Prabhupada, and Srila Prabhupada immediately accepted Prabhuji, and he personally traveled with Srila Prabhupada for around 3 years, and he has a lot of nectar to share. He has also authored a book, What is the Difficulty? So we request Prabhuji
to please shower nectar of Srila Prabhupada Katha. श्रील श्रुतकीर्ति प्रभु 20 वर्षों की आयु से इस्कॉन में उन्होंने योगदान दिया। श्रील प्रभुपाद के कई वर्षों तक सेक्रेटरी बने, सचिव बने, सेवक बने और उन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की है जिसका नाम है क्या समस्या है। तो कल भी हमने प्रभु जी से सुना, आज भी हम उनसे सुनेंगे और आशा करते हैं आप इस कथा का पूरा लाभ उठाएंगे। His Grace Shrutkirti Prabhu ki, जय Srila Prabhupada ki. जय। Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachorni Nirvisesa Sanyavari Paschacha Desatarane. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Welcome back. How many were here in last evening when I spoke? कल शाम को जब मैंने बोला कौन कौन यहाँ पे थे? Okay. We spoke a lot last evening about obeisances, dandavats. कल रात को हम लोग दंडवत के बारे में बातें कर रहे थे। So I was trying to think of what to do today. We have many topics about Srila Prabhupada. तो आज मैं सोच रहा था किस विषय के ऊपर बोलूं। श्रील प्रभुपाद के बारे में बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं। We can talk about Prabhupada's comments about sleeping. हम लोग श्रील प्रभुपाद के सोने के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा इसके बारे में बात कर सकते हैं। Chanting, जप के बारे में क्या कहते हैं, taking prasadam, प्रसाद कैसे लिया जाए, being on airplanes. हवाई जहाज में कैसे यात्रा की जाए। Anyone have anything in particular topic they would like me to speak about? क्या today? आप किसी विशिष्ट विषय को सुनना चाहते हैं? क्या कोई ऐसा विषय है जो आप बोलेंगे जो सुनना चाहते हैं? प्रभु जी बताएंगे। श्रील प्रभुपाद एक दक्ष प्रचारक। Everything. That's the point with Srila Prabhupada. Everything, all of these stories, they're not just sweet little stories. Everything he did was preaching. ये जो भी कथाएं आप सुन रहे हैं ये सब छोटी मोटी कथाएं नहीं हैं, ये सब कुछ प्रचार है। One of my favorite photos of Srila Prabhupada is watching his hand right here as he applies tilak. One of my favorite photos. मेरी एक मनपसंद तस्वीर वो है जिसमें श्रील प्रभुपाद यहाँ पे माथे के ऊपर तिलक लगा रहे हैं। I say just by looking at that photo, you can become Krishna conscious. केवल उस फोटो को देखकर ही कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बन सकता है। Because every move he made was actually under direction of Krishna. क्योंकि वे जो भी कार्यकलाप करते थे ये कृष्ण के दिशा निर्देश में हुए थे। Watching him chant Gayatri mantra उनको गायत्री का जप करते हुए देखना puts you in ecstasy. आपको भावातिरेक में डाल देगा। In New Dwarka, I had been Srila Prabhupada's servant for some time. न्यू द्वारका में मुझे श्रील प्रभुपाद का सेवक हुए कुछ समय हुआ था। That was another thing Srila Prabhupada did. I spoke somewhat about that yesterday. मैं देखा करता था श्रील प्रभुपाद कैसे व्यवहार करते थे और इसके बारे में मैंने कल भी कुछ बातें कही थी। He toyed with his disciples. वो अपने शिष्यों के साथ खेला करते थे। He had pleasure watching them run around trying to keep up with him. श्रील प्रभुपाद को अपने शिष्यों को दौड़ाने में और अपने साथ में रहते देखने में बड़ा आनंद आता था। I was with him, and I've never found it on Vedabase. But of course, every morning Srila Prabhupada would have his morning walk. मैंने कभी वेदावेस में ढूंढा नहीं या मुझे मिला नहीं, किंतु रोज श्रील प्रभुपाद सवेरे की सैर पे जाया करते थे। And of course, we know with like Bhakti Swarup Damodar Maharaj in Los Angeles, he would speak very much about science, the scientists. और हम जानते हैं कि भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ये लॉस एंजलिस में वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत बातें किया करते थे। And of course, the devotees surrounding him, we always very much try to be very attentive, understanding everything he said. और श्रील प्रभुपाद को घिरे हुए सभी भक्त बड़े ही ध्यान से वे क्या कह रहे हैं इसे समझने का प्रयास करते थे। But I had the good fortune of being many morning walks. तो मेरा ये सौभाग्य का विषय है कि मैं श्रील प्रभुपाद के साथ कई सवेरे की सैर में भाग लिया करता था। Almost 1,000 morning walks. करीब 1000 दिनों की सवेरे की सैर। So now when you're with them for some time, you get to see. Everyone has how they do things. जब आप उनके साथ हो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद कैसे आचरण करते थे। So Prabhupada, he could be right in the middle
of talking about the scientists and how nonsense rascal they are. श्रील प्रभुपाद इस वार्तालाप में कह रहे होंगे कि कैसे ये वैज्ञानिक कितने नालायक हैं, कितने बदमाश हैं, How foolish. कितने मूर्ख हैं. And then he would say this sentence. और फिर वे ये बात कहते थे. It was a very, very special sentence, and he would say it exactly the same. और हर बार श्रील प्रभुपाद इस एक वक्तव्य को दोहराया करते थे. And it was a combination of syllables and words that made absolutely no sense. और इन शब्दों का कोई व्यवहारिक अर्थ होता ही नहीं था. The syllables made sense, but when you put everything together, it made no sense at all. It was just a gobbledygook. It was just nonsense. तो श्रील प्रभुपाद ऐसा कुछ कहते थे, सुन के लगता था बकवास बोल रहे हैं. So we'd be walking and he'd be saying so many things, and then he would say this sentence. तो हम लोग चलते थे और बहुत कुछ बोला जाता था, तब श्रील प्रभुपाद ये वक्तव्य कहते थे. Every time he did it, all his disciples, they would be shaking their, yes, Prabhupada, yes. और जब भी वे ऐसा कहते थे, सब सारे शिष्य सिर हिलाते थे, हाँ श्रील प्रभुपाद, हाँ. I also, the first time, yes, मैं भी पहले Prabhupada. बात खड़ा होके हाँ श्रील प्रभुपाद. But he was saying it to show how foolish everyone is. तो श्रील प्रभुपाद ये दिखाना चाह रहे थे कि सब कितने मूर्ख हैं. Even his disciples, because they're agreeing शिष्य with him, भी. even though they have no idea what he's saying. श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी सब सर हिला रहे थे. Prabhupada wouldn't laugh. He would just say it and then he would move along. श्रील प्रभुपाद हंसते नहीं थे, कहते थे और आगे बढ़ जाते थे. But then a few months later, if I would hear that, I would understand he's making fools of all of us. कि तो कुछ महीने बाद मुझे समझ में आया कि श्रील प्रभुपाद हम सभी को मूर्ख बना रहे हैं. And then it would become like a little inside joke. Inside means just between a few people. तब ये हमें समझ में आया कि कुछ लोगों के बीच की हास्यपूर्ण घटना थी. So then you could relish with Prabhupada. तो इसको आप प्रभुपाद के साथ रह के ही इसका आस्वादन कर सकते थे. That was very nice. तो ये बहुत अच्छा था. Once in Mayapur, Prabhupada was walking down the large stairs from his room तो एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में अपने कमरे से उतर के नीचे आ रहे थे for his morning walk. सवेरे के भ्रमण के लिए. Myself, Brahmananda Maharaj was मैं there. ब्रह्मानंद महाराज वहाँ थे. So he gets to the bottom of the stairs. तो वे सीढ़ियों से उतर के नीचे आते हैं. And he's looking for one of his sannyasi disciples. और ये अपने एक सन्यासी शिष्य को खोज रहे थे. He wasn't there. वे वहाँ नहीं थे. When Prabhupada was present, it was the duty of every disciple, managers, his senior disciples, to be with him every moment possible. जब श्रील प्रभुपाद वहाँ मौजूद रहते थे तो हर वरिष्ठ भक्त शिष्य सन्यासी जीबीसी इत्यादि की ये जिम्मेदारी थी कि वे प्रभुपाद के साथ बने रहें. Just like Udayananda mentioned yesterday in Prabhupada's room in Vrindavan, he said, "Where are all my disciples?" जैसे कि उदयानंद प्रभु ने कल बताया, जैसे कि वृंदावन के कमरे में वे कह रहे थे, कहाँ गए मेरे सारे शिष्य. There should be no other desire given the opportunity to be sitting with him. यदि उन्हें मौका दिया जाए तो उन्हें और कोई सेवा नहीं करनी चाहिए, उन्हें उनके साथ श्रील प्रभुपाद के साथ आके बैठना चाहिए, Walking with him. उनके साथ टहलना चाहिए. So he got to the bottom of the stairs and he sees this sannyasi. He's not there. तो वे सीढ़ी से उतर के आते हैं और देखते हैं उनके सन्यासी शिष्य वहाँ पे नहीं है. And Prabhupada looks at me, he said, "Where is such and such Maharaj?" और प्रभुपाद मुड़ के और मेरी ओर देखते हैं और कहते हैं, कहाँ गए अमुक अमुक महाराज. And I don't know, Prabhupada. और मैंने कहा, प्रभुपाद मैं नहीं जानता. And one of my godbrothers said, "Prabhupada, he's sick." और तब मेरे गुरु भ्राता ने कहा, प्रभुपाद वो बीमार हैं. And I turned to Prabhupada. I said, "Yeah, Prabhupada, he has morning sickness." और तब मैं श्रील प्रभुपाद की ओर पलटा और मैंने कहा, प्रभुपाद उनको सवेरे की बीमारी लग चुकी है. Mataji, you understand, morning sickness, it was a double entendre. Morning sickness for women, when they're pregnant, they have morning sickness. जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनको ये सवेरे की बीमारी होती है. And Prabhupada laughed. He said, "Yes, morning sickness." और प्रभुपाद हंसे, बोलते हैं हाँ मॉर्निंग सिकनेस. And then he said, "If one is not up for the morning program, no prasadam." और तब श्रील प्रभुपाद ने कहा था, यदि कोई सवेरे के कार्यक्रम में न आए Haribo! तो कोई प्रसाद नहीं मिलेगा. हरि बोल.
That same place, Mayapur, Prabhupada had his 2 rooms on the first floor, second floor. Had his 2 rooms, his sitting room and his bedroom. तो उसी स्थान मायापुर पे श्रील प्रभुपाद के 2 कक्ष हुआ करते थे, एक बैठने के लिए और एक सोने के लिए. And his entourage, और उनकी पूरी टीम उनके साथ चला करती थी. entourage at that time was Pradyumna, प्रद्युम्न प्रभु, Brahmananda Maharaj, and ब्रह्मानंद महाराज, myself. मैं. So every morning after class, we would take prasadam on the veranda right in front of Prabhupada's room. तो रोज सवेरे कक्षा के पश्चात श्रील प्रभुपाद के कक्ष के सामने वरांडा में बैठ के हम लोग प्रसाद सेवन किया करते थे. Very nice Bengali khana. रोज बहुत अच्छा बंगाली स्वादिष्ट खाना. And the young Bengali brahmacharis, they would be serving about 8 or 10 of us. और हम 8-10 लोगों को नए जो बंगाली ब्रह्मचारी थे वे सेवा किया करते थे. And many times Prabhupada would come out of his room, his hand in his bead bag, and he would be chanting. और कई बार श्रील प्रभुपाद कमरे के बाहर आते थे और वे जप कर रहे होते थे. Don't ever think Prabhupada was just chanting. ये मत सोचिए प्रभुपाद सिर्फ जप कर रहे थे. He saw everything that was going on around him. उनके चारों तरफ क्या चल रहा था उनको सब कुछ दिखाई दे रहा था. So he'd be seeing what you're being served. तो वो ये देख रहे थे कि आपको क्या परोसा जा रहा है. He would see how much each person is eating. वो ये भी देख लेते थे हर कोई कितना खा रहा है. One day the brahmachari was putting some prasadam on my plate. एक दिन उस ब्रह्मचारी ने मुझे मेरी प्लेट में कुछ प्रसाद परोसा. Prabhupada came up to him. He Prabhupada said उनके पास something गए. to him just as he was serving me. और जब वे मुझे प्रसाद परोस रहे थे तो प्रभुपाद ने उनसे कुछ कहा. And then Prabhupada walked the other direction. और तब प्रभुपाद दूसरी ओर चलने लगे. I said, what did he say? मैंने कहा उनने क्या कहा. He said, he told me to give you lots of prasadam. तो वे कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा प्रसाद देने के लिए कहा है. I said, oh, okay. मैंने कहा ठीक है. Another time, when I was first with him, we were in Mumbai, और एक बार जब हम मुंबई में थे Kartikeya Mahadevi's house. कार्तिकेय महादेविया के घर पे. So now I had been in India for 3 months. तो अब मुझे भारत में रहते हुए 3 महीने का समय हो चुका था. India was not very kind to Sruta Kirti. भारत श्रुत कीर्ति के ऊपर बहुत दयालु नहीं रहा. If you read my book, you'll understand my great love of India while I was with Srila Prabhupada. यदि आप मेरी पुस्तक पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कि मैं भारत से कितना प्रेम करता था. I was always sick, मैं भारत में आके सिर्फ बीमार पड़ता था. like many of my god brothers and god sisters in India at that मेरे time. कई गुरु भाई और गुरु बहनों के समान मैं भी जब भारत आता था तो बार-बार बीमार पड़ता था. So a month before I had malaria. पहली बार मुझे मलेरिया हुआ. I didn't even know what malaria was. मुझे पता भी नहीं था मलेरिया क्या होता है. It was just before arriving in Mumbai. ये मुंबई में आने के ठीक पहले की घटना है. And we were staying at a life member's house in Ahmedabad. अहमदाबाद में एक लाइफ मेंबर के घर पर रुके हुए थे. And Prabhupada did a 1-week Bhagavat Sapta. और प्रभुपाद ने एक भागवत सप्ताह का आयोजन किया था. Anyway, I had malaria. All I know was I was very, very sick. मुझे मलेरिया था. मुझे बस इतना पता था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार था. And my head felt like it was going to explode. I had this very high fever. सिर में ऐसा लगता था मानो विस्फोट हो जाएगा. बहुत ही उच्च तापमान था. And I was in bed. और मैं बिस्तर में था. Prabhupada came to see me Prabhupada lying मुझे in देखने के bed लिए at this people's house. प्रभुपाद मुझे उस घर में लेटे हुए देखने के लिए आए. And he was directing them. You do like this, you do like this. He had them call a homeopathic physician. और श्रील प्रभुपाद ने बताया तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए. और प्रभुपाद ने होम्योपैथिक वैद्य को बुलाया. So all I remember was this little Indian man with this little black case with 100 bottles that all looked exactly the same with little white balls in them. और मैंने देखा एक भारतीय व्यक्ति वहाँ पे अंदर आते हैं और उनके सूटकेस में एक ही रंग की कई प्रकार की बोतलें भरी हुई थी. All this was very, very new to me. तो ये सब मेरे लिए बहुत नई नई बातें थी. Anyway, they administered a few of these little sugar balls. खैर उन्होंने किसी प्रकार से दवाई बनाई. And I started to get better. और मैं ठीक होने लगा. And finally I was doing my service again. और मैं फिर से अपनी सेवाओं में नियुक्त हो गया. I was very young and kind of innocent, naive.
मैं उस समय बहुत नौजवान था और बहुत भोला भी था. And Prabhupada was literally, he was my father. और प्रभुपाद मेरे पिता की तरह थे. Not just spiritually, he was my father. सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं, मेरे पिता ही थे. My father died when I was 3. मेरे पिता का देहांत तब हुआ जब मैं 3 वर्षों का था. And I had a mother, Italian mother, and 2 older sisters. मेरी एक माँ थी. I had my mother and 2 elder sisters. मेरी एक माँ थी और 2 बड़ी बहनें थी. And that's how I was raised until I left home at 19. और इस प्रकार से मेरी परवरिश हुई थी जब मैंने 19 साल की उम्र में घर छोड़ दिया. I literally had no male influence in my life until I was with Srila Prabhupada. तो मेरे जीवन में किसी पुरुष का प्रभाव तब तक नहीं था जब तक मैं श्रील प्रभुपाद से नहीं मिला. So I would go to him with my little difficulties, whatever it may be. तो मेरी जो भी छोटी मोटी समस्याएं थी मैं उनको लेकर प्रभुपाद के पास जाया करता था. So I was just speaking to him and I said, Prabhupada, I've never been so sick in my whole life. तो मैं प्रभुपाद के पास गया और कहा, प्रभुपाद मैं अपने सारे जीवन में इतना बीमार कभी भी नहीं पड़ा. He looked at me, he said, really? तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, सही में? He said, disease is our natural condition. उन्होंने कहा बीमारी हमारी स्वाभाविक स्थिति है. He said to be healthy, that's very, very rare. स्वस्थ रहना ये बहुत ही दुर्लभ है. Anything Prabhupada would say to you, you can take on this level, you can take it on this level, you can take it on this level. प्रभुपाद आपसे जो कुछ भी कहें उसको आप हर स्तर पे स्वीकार कर सकते थे. Just like I said last night, Prabhupada's first words, follow me. जैसे कि श्रील प्रभुपाद को मुझे कहे गए पहले शब्द, मेरा अनुसरण करो. We can say it's a very simple instruction, हम कह सकते हैं कि तो बहुत साधारण निर्देश है. or we can realize it's the most profound instruction. और हम इसकी भी अनुभूति कर सकते हैं कि ये सबसे गहरा निर्देश है. Like he said, the person banging the cartels by his Vyasa-san during Kirtan one day. जैसे कि एक बार श्रील प्रभुपाद व्यासासन पर बैठे बैठे अपने करताल बजाते हुए सामने वाले व्यक्ति को निर्देश दे रहे थे. He was following his own beat. वो अपने खुद की ताल चला रहा था. Prabhupada looked at him. प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा. He said, first learn to follow. उनको पहले सिखाया, पहले अनुसरण करो. Then you can lead. तब जाके नेता बनो. So everything with Prabhupada was like that. When he said something, it was all like an eternal instruction to us. श्रील प्रभुपाद जो कुछ भी कहते थे वो हमारे लिए नित्य निर्देश के समान था. At the time I didn't realize what he said. Our condition, we're always diseased. श्रील प्रभुपाद ने तब कहा था हमारी परिस्थिति स्वाभाविक रूप से बीमार होना है. You know what that disease is? क्या आप जानते हो बीमारी क्या है? This one, skin disease. चमड़े का रोग, चर्म रोग. We all think we're this body. हम सब सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं. That's our disease. ये हमारी बीमारी है. So then a month later, we're in Mumbai on a morning walk. एक महीने के बाद हम मुंबई में थे. सवेरे का भ्रमण चल रहा था. Right along the sea. समुद्र किनारे. At the start of the walk, we're walking along and there's one guy sleeping right on the sidewalk. तो जब हम सैर शुरू कर रहे थे तो बाजू में एक व्यक्ति सो रहा था. Not an unusual sight. तो ये कोई देखने के लिए विचित्र दृश्य नहीं था. And as we walked by, and Prabhupada, he wouldn't turn, he'd just keep walking, his head always very high. You see Prabhupada walk so regally. श्रील प्रभुपाद राजसी अंदाज में सिर उठा के इधर उधर न देखते हुए सामने चलते ही जा रहे थे. That was another thing to understand. He looked like a king and at the same time he was the most humble person. देखने में श्रील प्रभुपाद एक राजा के समान प्रतीत होते थे किंतु उसी समय वे सबसे अधिक विनम्र व्यक्ति थे. How to do that? आप ऐसा कैसे कर How to सकते be हैं? regal and humble. आप राजसी और विनम्र कैसे हो सकते हैं? Anyway, we walked by this man sleeping on the sidewalk. खैर हम लोग उस व्यक्ति के पास से निकले जो सो रहा था. And Prabhupada just looked at me, he said, he's dead. और प्रभुपाद ने मेरी ओर पलट के देखा और कहा वो मर चुका है. Yeah, hour later we're coming back in the other direction and of course he's still lying there on the sidewalk. और जब हम वापस लौट के आए तो हमने देखा वो व्यक्ति अभी भी वहीं पड़ा हुआ था. Prabhupada could feel everything around him. प्रभुपाद अपने चारों ओर होने वाली हर चीज को महसूस कर सकते थे.
when he would get off of the airplane, he never stood directly behind anyone. जब श्रील प्रभुपाद हवाई जहाज से उतरते थे तो ये किसी के पीछे कभी भी नहीं खड़े होते थे. You know how we all bunch up to get off of the plane as quickly as possible. जैसे हम सब लोग हवाई जहाज से उतरने के लिए कैसे चिपक जाते हैं. He always left a space. He's not interested in being just behind someone. तो वो किसी व्यक्ति के ठीक पीछे कभी भी नहीं खड़े होते थे, हमेशा कुछ दूरी बनाए रखते थे. Nor should you just be just behind him on a morning walk. और आपको सवेरे की सैर पे श्रील प्रभुपाद के ठीक पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए. Because he could be walking so fast and stop just like that. क्योंकि हो सकता है वो बड़ी तेजी से टहल रहे हैं और अचानक खड़े हो जाएं. And if you're not attentive, you could actually bump into him. Even sometimes devotees would tread on his feet, his shoes. और यदि आप सावधान न हो तो हो सकता है आप उनसे टकरा जाएं. कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि भक्त लोग उनके चरणों के ऊपर, जूतों के ऊपर पैर रख दिया करते थे. Once he turned, he said, "That's very bad." एक बार श्रील प्रभुपाद पलटे और कहते हैं ये बहुत खराब है. Of course it is. हाँ, ये तो खराब है. But it's about being attentive. किंतु ये सावधान रहने की बात है. Everything I learned from Prabhupada was about paying attention to what you're doing. मैंने प्रभुपाद से शिक्षा ग्रहण की कि आप जो कुछ भी करें उसकी ओर ध्यान दें. He never stumbled, he never tripped. Every move he made was with consciousness. श्रील प्रभुपाद कभी फिसले नहीं, कभी गिरे नहीं, एक एक कदम पूर्ण सचेतन होकर रखा करते थे. So on this morning walk, it's myself, Srila Prabhupada, myself, and Shyama Sundar, just the three of us. तो इस सवेरे की सैर में श्रील प्रभुपाद, मैं और श्याम सुंदर प्रभु, केवल हम तीन लोग थे. Of course, morning walk starts when just as the sun is breaking the horizon. जब सूर्योदय हो रहा हो उसी समय सवेरे की सैर शुरू हुआ करती थी. So that after 15 minutes or so, the sun's up somewhat. तो 15 मिनट चलने के बाद सूर्योदय हो चुका होता था. And my 10-year-old older godbrother Shyama Sundar, और मुझसे 10 वर्ष वरिष्ठ श्याम सुंदर प्रभु, who had been in India a few times already with Srila जो Prabhupada, श्रील प्रभुपाद के साथ भारत में पहले ही आ चुके थे, he looked at me as we're walking उन्होंने मेरी ओर देखा जैसे हम चल रहे थे and he started laughing at me. और वो मुझे देख के हंसने लगे. He said, "Your eyes are so yellow." तुम्हारी आंखें इतनी पीली हैं. And he laughed. He said, "Boy, do you have jaundice?" तुमको पीलिया हो चुका है. But he was laughing about it. किंतु वो उसके बारे में हंस रहे थे. Is all I knew was I felt rather weak. और मुझे बड़े कमजोरी का अनुभव हो रहा था. So we continued with the walk. We तो हम get लोग back. चलते रहे, वापस आए. We get back to Kartikeya Mahadevi's place. हम कार्तिकेय महादेविया के स्थान पर पहुंचे And that was the big news और at the ये एक बड़ी house. खबर बन चुकी थी. Tamal Krishna Maharaj, Gargamuni, whoever was there, Shrutakirti has jaundice. तमाल कृष्ण महाराज, गर्ग मुनि, जो भी है, सबको पता पड़ गया श्रुत कीर्ति को पीलिया हो चुका है. And then the very serious Tamal Krishna Maharaj, he looks at me. He said, "You can't serve Srila Prabhupada. You have jaundice. It's very contagious." उन्होंने मेरी ओर देख के कहा कि तुम श्रील प्रभुपाद की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें पीलिया हो चुका है और ये बहुत ही छुआछूत का रोग है. You can't cook for him. You can't touch the plates. You can't massage him. Nothing. तुम रसोई नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते, उनकी मालिश नहीं कर सकते, दूर रहो. I didn't feel that bad, but I did see my eyes. मुझे इतना खराब नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपनी आंखें देख सकता था. So I did what any son would do. तो जो हर पुत्र करेगा मैंने वही किया. I went into Prabhupada's room. I offered my obeisances and I sat up. मैं प्रभुपाद के कक्ष में गया, प्रणाम किया और उठ के बैठ गया. I said, "Srila Prabhupada, I have jaundice." मैंने कहा श्रील प्रभुपाद मुझे पीलिया हो गया है. He said, "Oh?" मैंने कहा अच्छा, He said, "What are the symptoms?" क्या लक्षण है? I said, "Well, my eyes are yellow. मेरी आंखें पीली पड़ चुकी हैं, My urine is brown. मेरा मूत्र, And I feel very weak." और मैं बड़ा कमजोर हो गया हूँ. Prabhupada looked at me. प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा. He said, "Perhaps I have jaundice." प्रभुपाद कहते शायद मुझे भी जॉन्डिस है. Again, this is our condition. We're sick all the time. तो ये हमारी परिस्थिति, हम सब समय बीमार रहते थे. And then
And I just let that go, and I said, well, tomorrow Krishna Maharaj says I shouldn't do my service because it's very contagious. और तमाल कृष्ण महाराज ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि ये छुआछूत करोगे। Prabhupada looked at me. प्रभुपाद ने मेरी ओर देखा। He said, do you have strength to do your services? प्रभुपाद ने कहा क्या तुम्हारे पास सेवा करने के लिए समुचित शक्ति है? I said, yes, मैंने Prabhupada. कहा हाँ प्रभुपाद। He said, just do your service, don't worry about it. तो प्रभुपाद ने कहा बस अपनी सेवा करते रहो, ज़्यादा चिंता मत करो। It's described in Srimad Bhagavatam, first canto, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन किया गया है, both in verses and purport. श्लोक में और तात्पर्य में भी। The pure devotee is unaffected by the threefold miseries. भगवान के शुद्ध भक्त त्रिताप क्लेश से सर्वथा मुक्त रहते हैं। He doesn't have skin disease. उन्हें चमड़ी का रोग नहीं होता। He just carries on and does his service under every condition. किसी भी परिस्थिति में वो अपनी सेवा करते रहते हैं। And that's what he told me. और उन्होंने मुझे ये बताया। What was one of the most wonderful things about Prabhupada? He treated us as if we were pure devotees. श्रील प्रभुपाद की एक खास बात है, वे अपने शिष्यों से ऐसे बर्ताव करते थे मानो वे भी शुद्ध भक्त हो। That's very intelligent to do that. और ये बड़ी बुद्धिमानी का काम है। He would raise you up just by making believe that you were a pure devotee, just like him. वे आपसे ऐसा आचरण करते थे, आपको ऐसे आपकी ऐसी परवरिश करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो आप भी उनकी तरह शुद्ध भक्त हो चुके हों। And it did encourage us. और उन्होंने हमें प्रोत्साहित भी किया। Back then, 50 years ago, we all thought we were going to go back home, back to Godhead in this very lifetime because he told us we were. 50 साल पहले हम सबको यही लगता था कि हम इसी जीवन काल में भगवत हम वापस जाने वाले हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कहा है। Personally, it would be millions of lifetimes if I even have the opportunity. But he made us think otherwise. व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि मैं करोड़ों जीवन में भी जा पाऊंगा, किंतु श्रील प्रभुपाद हमसे कहते थे तो लगता था। 2 years went by. 2 साल बीत गए। You know, I don't remember what I spoke last night. 2 years went by. I'm Prabhupada's servant. 2 साल बीत गए, मुझे नहीं याद है मैंने कल क्या कहा, किंतु 2 साल बीत गए। And we're back in the very same place in Ahmedabad where I was so sick. और हम वापस उसी स्थान पर आए अहमदाबाद जहाँ पे मैं इतना बीमार था। And now Brahmananda Maharaj, he's Prabhupada's secretary. और अब ब्रह्मानंद महाराज ये श्रील प्रभुपाद के सचिव नियुक्त हुए थे। Talk about a special devotee. Brahmananda Maharaj, such a special devotee. ब्रह्मानंद महाराज ये इतने विशिष्ट भक्त हैं। Prabhupada wrote him 180 letters श्रील प्रभुपाद ने उन्हें 180 चिट्ठियां लिखी थी in 10 years. 10 वर्षों की अवधि में। Figure that out, how special Brahmananda was, विचार कीजिए ब्रह्मानंद special महाराज he कितने is. विशिष्ट थे। how much he loved Srila ये Prabhupada. श्रील प्रभुपाद से कितना अधिक प्रेम किया करते थे। And Srila Prabhupada reciprocated और श्रील that प्रभुपाद love. प्रेम का विनिमय करते थे। Now we're all eating lunch अब सब लोग बैठ के प्रसाद ले रहे हैं in our own little room. हमारे अपने छोटे से कमरे में। Prabhupada would have to go through that room to Prabhupada- use the toilet. प्रभुपाद को शौचालय का प्रयोग करने के लिए उसी कमरे से जाना होता था। So before lunch, I was in Prabhupada's room. तो प्रसाद के ठीक पहले मैं प्रभुपाद के कक्ष में था। And like his son, I had to tell him what's going on. और अपने उनके पुत्र की तरह मुझे उनको बताना था कि क्या चल रहा है। I said, Prabhupada, Brahmananda Maharaj has jaundice. मैंने उनको बताया प्रभुपाद ब्रह्मानंद महाराज को पीलिया हो चुका है। He said, oh, उन्होंने कहा हो, what are the symptoms? क्या लक्षण है? I have no memory about 2 years ago. मुझे 2 साल पहले की कोई भी घटना याद नहीं थी। And I say, his urine is brown, his eyes are yellow, he has no appetite, he's very, very weak. मैंने बताया कि उनका मूत्र भूरा हो चुका है, उनकी आंखें पीली पड़ चुकी हैं, उनको भूख नहीं लग रही है, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। What did Prabhupada say? तब प्रभुपाद ने क्या कहा? Perhaps I have jaundice. प्रभुपाद ने कहा शायद मुझे भी जॉन्डिस है। I just shook my head, offered obeisances and left. तो मैंने बस प्रणाम किया और बाहर आ गया। So now Prabhupada's walking through our room, his entourage room, to go to use
the toilet. अब प्रभुपाद शौचालय में जाने के लिए हमारे कक्ष से होकर गुजर रहे हैं। Brahmananda has jaundice. ब्रह्मानंद को पीलिया हो चुका है। We're all taking prasadam. हम सब प्रसाद ले रहे हैं। Of course, one of the rules when you have jaundice, you eat very, very simple. पीलिया का एक नियम है कि आपको बहुत ही सादा खाना खाना होता है। No ghee, कोई घी नहीं, avoid grains. किसी प्रकार का अन्न नहीं। We're talking about Brahmananda. हम ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं। He had his plate. उनके सामने उनकी प्लेट थी। It looked like Govardhan Hill. It was this high. देखने में गोवर्धन पहाड़ के समान प्रतीत हो It रही। was all boiled vegetables. सब उबली हुई सब्जियां, But it was this big. किंतु ये पहाड़ के समान थी। Prabhupada sees everything. प्रभुपाद सब कुछ देखते हैं। He's not just walking by. वो केवल कमरे से गुजर नहीं रहे थे। These are all his children. He wants to know what's going on with all of you. ये उनके बच्चे थे, वे जानना चाह रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा था। And he sees Brahmananda's plate. और उन्होंने ब्रह्मानंद की प्लेट की ओर देखा। And he turns to him. He says, "Are you going to eat all of that?" और तब प्रभुपाद से कहते, क्या तुम ये सब खाने वाले हो? Brahman, yes, Prabhupada. ब्रह्मानंद कहते, हाँ प्रभुपाद। Okay, he said. ठीक है, He said, you take as much as you want, तुम जितना जी में आए खाओ, but you eat everything on your plate. किंतु प्लेट में मौजूद हर चीज खा लेना। Yes. You never waste, not even one grain of rice prasadam on your plate. तो प्रसाद के एक दाना भी नष्ट नहीं करना। All these things, they were, we say, drilled into my head while I was with Prabhupada. जब मैं श्रील प्रभुपाद के साथ था तो ये सब बातें मेरे दिमाग में घुसा दी गई थी। So all the details are important in Krishna consciousness. तो ये बारीकियां कृष्ण भावनामृत में बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। All these little things, ये सब छोटी छोटी बातें, like I said yesterday, not offering obeisances, Prabhupada said, beginning of his fall down. जैसे कि मैंने कल रात को बताया था, प्रणाम नहीं करना, श्रील प्रभुपाद ने कहा था ये इसके पतन की शुरुआत है। All of these things, they will keep you from experiencing your ecstasy in Krishna consciousness. तो इन सब चीज़ों से आप कृष्ण भावनामृत में भावातिरेक का अनुभव कर सकते हैं। We know, no one knows more than Udayananda Prabhu, most important service, उदयानंद प्रभु से अधिक कोई नहीं जानता सबसे महत्वपूर्ण सेवा, distributing books. ग्रंथ वितरण। Satsvarup Maharaj also heard that instruction very often from Prabhupada. सतस्वरूप महाराज ने भी इस निर्देश को श्रील प्रभुपाद से अनेक बार सुना था। But he was engaged in different preaching work. किंतु ये अलग अलग प्रकार के प्रचार के कार्यों में संलग्न थे। And he wrote Srila Prabhupada, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को लिखा, I'm thinking I should stop this service and just distribute books because it's most important. मुझे लगता है कि मुझे इन सब सेवाओं को बंद करके केवल ग्रंथों का वितरण करना चाहिए क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। Prabhupada said, yes, it is most important. प्रभुपाद ने कहा हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, He said, and your service is most important. किंतु तुम्हारी सेवा भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। Pujari is most important service. पुजारी सेवा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। When Prabhupada said most important, it didn't mean anything was less important. जब प्रभुपाद कहते थे सबसे महत्वपूर्ण, इसका अर्थ कोई भी चीज कम महत्वपूर्ण नहीं थी। I began to understand everything we do is most important. तो to मुझे do समझ it. में आया कि हम जो कुछ भी करते हैं ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। That's our business. यही हमारा कार्य है। So again, now we're back in Mayapur on the veranda. तो हम मायापुर के वरांडे में वापस आ गए And we're having breakfast. और हम सवेरे का प्रसाद ले रहे हैं। You know, even if you don't read one of Prabhupada's books, if you're traveling with him, you're hearing living Bhagavat, person Bhagavat. He was our Bhagavatam, walking around. तो यद्यपि आपके साथ पुस्तकें न भी हों तो भी आप श्रील प्रभुपाद के साथ थे और वे चलते फिरते भागवत थे, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता था। I gradually learned everything he said was from Srimad Bhagavatam. मुझे बाद में समझ में आया श्रील प्रभुपाद जो कुछ भी कहते थे सब कुछ श्रीमद् भागवतम से था, Bhagavad Gita. भगवद गीता से था। So we would hear so often from Prabhupada, reduce your sleeping, reduce your eating. हम श्रील प्रभुपाद से अक्सर सुना करते थे खाना कम करो, सोना कम करो, Just accept the bare necessities.
केवल जीवन यापन को ही स्वीकार करो। And we would try to follow that. और हम इसका अनुशीलन करने का प्रयत्न करते थे। Pradyumna was hearing very clearly. प्रद्युम्न बड़े स्पष्टता से सुन रहे थे। And he felt like he was sleeping too much. और उनको ऐसा लगा कि वो ज़्यादा सो रहे थे। Because Prabhupada told us, minimize your sleeping and क्योंकि eating. प्रभुपाद ने हमसे कहा था कि खाना सोना कम करो। So he read somewhere in Ayurveda, just take a dozen almonds for breakfast. You blanch them overnight, take the skins off. Dozen almonds and a little milk, very good for the brain and can sustain you. तो उन्होंने किसी आयुर्वेद की पुस्तक में पढ़ा था कि 12 बादाम को छिलका निकाल के रात भर दूध में भिगो के रखो और सवेरे खाओ, दिमाग के लिए बड़ी अच्छी खुराक है। And he felt guilty that he was sleeping too much, so he didn't come to breakfast. तो उनको बड़ा बुरा लग रहा था कि वो ज़्यादा सो रहे हैं, तो इसलिए वो नाश्ते में नहीं आए। Prabhupada's walking back and forth in the veranda, hand in his bead bag. प्रभुपाद आगे पीछे टहलते हुए जप माला से जप कर रहे थे, Seeing everything. सब कुछ देख रहे थे। Of course, he comes right up to me. Where's Pradyumna? मेरे पास आके कहते हैं, कहाँ गए प्रद्युम्न? He knew just who to ask. वो जानते थे किससे पूछना चाहिए। I was like, I would say anything. Prabhupada asked, I would say anything about anyone to him. प्रभुपाद जब भी कुछ पूछते थे मैं किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता था। In his entourage, Prabhupada's entourage, our pleasure was to tell on one another to Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद की टीम में हमें एक दूसरे के बारे में प्रभुपाद को बताने में बड़ा आनंद आता था। He may call me into his room. Where's Shyama Sundar? Oh, he's sleeping. वे मुझे अपने कमरे में बुलाते थे और पूछते थे कहाँ गए श्याम सुंदर, और मैं बताता वो सो रहा है। Because it meant he wasn't yelling at you, somebody else. इसका मतलब वो आप पे नाराज नहीं हो रहे थे, किसी और पे नाराज हो रहे थे। So we'd be very happy to describe what the others were doing. तो दूसरे क्या कर रहे हैं इसका वर्णन करने में हमको बड़ा आनंद आता था। So he said, where's Pradyumna? तो उन्होंने पूछा प्रद्युम्न कहाँ है? I said, oh, he's not taking breakfast, Prabhupada, because he says he's sleeping too much. श्रील प्रभुपाद वो प्रसाद नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। Prabhupada looked at me, shook his head. प्रभुपाद ने देखा और सिर हिलाया। He went right to our room. वे सीधे अपने कमरे में गए। Pradyumna, he was surrounded by books, like a wall. प्रद्युम्न प्रभु ने अपने आप को पुस्तकों से घेर रखा था, एक दीवार की तरह। We know Prabhupada called him Panditji. हम जानते हैं प्रभुपाद उन्हें पंडित जी कहा करते थे। Sometimes he would call him Banditji. कभी कभी वे उन्हें पंडित जी भी कहा करते थे। We would travel on the plane. He would have book bags, all these different books he would collect every city we went to. और हम लोग जब हवाई जहाज से यात्रा करते तो दोनों कंधों पे इनके बुक बैग रहा करता था, अलग अलग शहरों से अलग अलग पुस्तकें संग्रह करते Prabhupada would shake his head. So many books, he's not reading any of them. श्री प्रभुपाद कहते थे इसके पास इतनी पुस्तकें और एक भी नहीं पढ़ता है। This was our family with Prabhupada. We were his boys. तो ये हमारा श्री प्रभुपाद का परिवार था, हम उनके बेटे थे। So he goes into the room. Pradyumna, why aren't you having breakfast? तो वे कमरे में गए, कहते प्रद्युम्न प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? Prabhupada, he said, if I eat, he said, then I just sleep. वे बोलते हैं प्रभुपाद अगर मैं खाऊंगा तो सो जाऊंगा। Prabhupada looked at him. प्रभुपाद ने उनकी ओर देखा। He said, sleep 10 hours a day if you have to. You have to have prasadam. अगर जरूरत हो तो 10 घंटा सो, किंतु प्रसाद लेना जरूरी है। He said, how can you do service if you don't eat prasadam? He said, get out here, take prasadam. He said, sleep all day if you need to. यदि तुम प्रसाद नहीं लोगे तो सेवा कैसे करोगे? तो प्रसाद लो और चाहे दिन भर सो। Gradually I began to understand what Prabhupada was saying. धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाहते थे। Everything will happen in time. You're going to eat less. You're going to sleep less. All these things are going to happen in their own time. सब कुछ अपने समय से होगा, धीरे धीरे आपका सोना कम होगा, खाना कम होगा। One of his statements, he was, eat as much as you can digest. That's what you should eat. श्रील प्रभुपाद का एक वक्तव्य है, हमें उतना खाना चाहिए जितना हम हजम कर सकें। At the Manor, 1973, भक्ति वेदांत मैनर 1973 की घटना है। Karuna Dakshai Vishnu, Shira Dakshai Vishnu. Anyway, it was one of Prabhupada's first Indian disciples in England. गर्भदक्षाय विष्णु या क्षीरोदक्षाय विष्णु ये श्रील प्रभुपाद के पहले भारतीय शिष्य थे जो इंग्लैंड में थे।
He had a few sons. Prabhupada initiated them as well. इनके कुछ पुत्र थे, श्रील प्रभुपाद ने उन्हें भी दीक्षा दी थी. So he had Prabhupada over to the house with all of his disciples living at the manor, maybe 20 at the time. तो उस समय मैनर में श्रील प्रभुपाद के 20 से अधिक शिष्य रहा करते थे, तो वे उनके घरों पे जाया करते थे. His disciples, we loved to go to life members' houses and have big feasts. शिष्यों को लाइफ मेंबर के घर पे जाके बड़े बड़े भोजन उत्सव में भाग लेने में बड़ा आनंद आता था. Prabhupada did it as a duty, to encourage. श्रील प्रभुपाद दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए दावत में जाते थे. There's a photo with us in the living room, one big room. Prabhupada was at the head, sitting on a chair with a table in front of him. श्रील प्रभुपाद एक बड़े कक्ष में सामने एक बड़ी मेज के पीछे बैठे हुए थे. And there's 2 rows of his disciples. और 2 पंक्तियों में उनके शिष्य बैठे थे. Eagerly awaiting our puris, halava, chutney, sweet rice. बैठे हुए थे, पूड़ी, हलवा, चटनी, खीर सब कुछ आएगा. But there was a rumor before we went to this devotee's house. किंतु इस व्यक्ति के घर में जाने के पहले एक अफवाह फैली हुई थी. He cooked in oil. वो हर चीज को तेल में बनाता था. That was unheard of in Iskcon. इस्कॉन में इस किसी ने सुना भी नहीं था. Prabhupada told us, oil for the outside of the body, ghee for the inside of the body. श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया था, तेल शरीर के बाहर घिसने के लिए होता है और घी शरीर के अंदर खाने के लिए होता है. But we really didn't care because of puri, halava, sweet rice, क्योंकि हमको कोई चिंता नहीं. pakoras, samosas. पकोड़ा, समोसा, पूड़ी, हलवा, खीर सब कुछ We था. didn't see the oil, so it was okay. हमको देखने में सब अच्छा ही लग रहा था. So we all took तो prasadam. हमने पेट भर के प्रसाद लिया. Then we all go back to the temple, फिर हम मंदिर वापस जाते हैं. take rest after our big lunch, बड़ी दावत खाने के बाद सो जाते हैं. and then I hear the bell ring. और तब मैंने घंटी सुनी. I was like that mouse, the bell rings, right in the door. मैं उस चूहे की तरह था, घंटी बजते ही मैं दरवाजे में घुस जाता था. I offer obeisances. मैंने जाके प्रणाम किया. Prabhupada looks at me. प्रभुपाद मेरी ओर देखते हैं. He said, everyone enjoyed सब लोगों ने दावत उड़ाई. the feast? Yes, Prabhupada. I'm a blank, no brain, nothing going. Cow dung, or Prabhupada would say buffalo dung in the brain. मैं मेरे दिमाग में मान लो गाय का गोबर, भैंस का गोबर भरा हुआ हो, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. But he would play with me. किंतु वो मेरे साथ खेल किया करते थे. I miss those days so much. Everyone's okay? सब लोग ठीक हैं? And then it hit me. और तब मुझे समझ में आया. Super souls inside. He woke me up अंदर के परमात्मा ने मुझे जगा दिया. for Prabhupada's pleasure. प्रभुपाद के संतुष्टि के लिए. And I said, well, Prabhupada, some of the devotees, they're not feeling well. प्रभुपाद कुछ भक्तों को अच्छा नहीं लग रहा है. I said, Pradyumna's not feeling well. प्रद्युम्न को अच्छा नहीं लग रहा है. I said, and they say they cooked in oil. वो लोग कह रहे थे उन्होंने तेल में खाना बनाया था. Prabhupada said, yes. प्रभुपाद ने कहा हाँ. He said, Pradyumna ate 10 puris. प्रद्युम्न ने 10 पूड़ियाँ खाई. 10 puris he had. 10 पूड़ियाँ खाई. Prabhupada knew. प्रभुपाद जानते थे. Just sitting at the head of the table. He knew everything we're doing. वहाँ बैठ Every के हम bite we're putting in our mouth. क्या कर रहे थे, कितना खा रहे थे, प्रभुपाद सब कुछ You देख रहे couldn't hide anything. थे. आप प्रभुपाद से कुछ नहीं छुपा सकते. Like we say, like the sun and the moon, you're always being watched. जैसे कि सूर्य और चंद्रमा सब कुछ देखते हैं. And then I said, well, yes, Prabhupada. I said, but I knew they were cooking in oil. I said, I didn't eat much of anything that was fried. कि तो श्रील प्रभुपाद मुझे पता था कि सब लोग तेल में रसोई कर रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया. Prabhupada has a straight face the whole time. No laughing, no, just very matter of fact. प्रभुपाद के चेहरे पे कोई भाव के लक्षण दिख नहीं रहे थे, सीधे सीधे बात कर रहे थे. Inside he's laughing at us अंदर ही अंदर all. बड़े हंस रहे थे, मुझे दिख रहा था. And he said, that's true. He said, you didn't eat very much. उन्होंने कहा सही बात बोल रहे हो, तुमने ज़्यादा नहीं खाया. He said, but you did eat 4 puris. किंतु तुमने 4 पूड़ियाँ खाई. Hare Krishna. It's already 1 o'clock. I think I'm supposed to stop here. Yes? I don't have anyone speaking after me at this time, so
And it's prasadam time. So everyone, you're supposed to take prasadam to your full satisfaction. तो सभी को पेट भर के प्रसाद लेना चाहिए. Yes. Any questions? We'll break here. कोई प्रश्न? No questions. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. It's all Prabhupada's mercy. My being here is only by Srila Prabhupada's mercy. And I'm here because I understand Prabhupada's mercy, his compassion. Otherwise, I have no business being amongst devotees. मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा को समझ पाया हूँ, उसे ग्रहण कर पाया हूँ. अन्यथा मेरे यहाँ रहने की कोई भी योग्यता नहीं है. भक्तों के बीच में रहने की मेरी कोई योग्यता नहीं है. Just now? Yeah. Manu Maharaj is just about to arrive. So as many as possible, you can all come and greet very wonderful devotee Bhanu Maharaj. तो भानु महाराज आने वाले हैं, जीबीसी के चेयरमैन बहुत ही जल्दी उज्जैन में पधारने वाले हैं. तो अधिक से अधिक भक्त उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं. Srila Prabhupada ki jai. Bhakti Charu Maharaj ki jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much, His Grace Shrutakirti Prabhu. And Prabhuji, yesterday also, Prabhuji mentioned that small things are very important. And yesterday he mentioned that attentiveness, attention, that is the word we should keep in mind while serving our spiritual master. And Prabhuji has perfectly done that. We may not have seen Srila Prabhupada, but because of his merciful and wonderful presentation, he is bringing us closer to Srila Prabhupada, and we are very happy in this Srila Prabhupada Memorial Festival because of presence of all such great souls. Really, this festival is becoming a success. Thank you very much. We will express our gratitude to all these devotees by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Shrutakirti Prabhu ki. So, as Prabhuji mentioned, His Holiness Bhanu Swami Maharaj is arriving just 5 minutes. So, devotees can go at gate number 2 and welcome Maharaj. And then there is a lunch at 1:30 p.m. And then at 4 p.m. we have 2 classes.